जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फालतू कट गेमर में और आप देख रहे हैं पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट। तो भाई पिछले पार्ट में तो हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से स्कूल ब्रॉल जो है वो जीत लिया था। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग मैचेस हुए थे और टीचर वीचर भी आ गए थे भाई। दो टीचर से हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ था भाई। विस तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आया कि भाई स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि आपको गेम के बारे में और पुरानी जो हिस्ट्री है, लेजेंडरीज की हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको काफ़ी हद तक नॉलेज जो है और सीक्रेट जो है वो पता चलेगा। और स्पेशली आप लोगों ने जोर दिया है कि भाई हिस्ट्री क्लास जो है वो तो करना ही। और किसी ने तो कहा था कि आप डेट पे भी जा सकते हो अपने टीचर के साथ। मुझे ये नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, बट पहले एक चीज़ काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं मुझे, तो मैं वो पहले निपटा लेता हूँ। राइट, पहले डायरेक्टर के ऑफिस चलते हैं, देखते हैं बुद्धेश्वर क्या बोलता है। तो ये जो वीडियो रहेगी, हम मोस्टली जो है ट्राई करेंगे सारी चीज़ें कंप्लीट करने की यहाँ पर। थैंक यू अगेन फॉर योर आउटस्टैंडिंग वर्क ऑन ऑपरेशन स्टारफॉल। I cannot tell you how relieved I am that we were able to help Miss Penny as we did. And I know she is exceedingly grateful to you for your parts in all this. Okay, बस इतना ही है। So I have one more thing to ask you. अच्छा, though the request is admittedly of a delicate nature, do you think you could continue being good friends with Miss Penny? Obviously. Okay. I must say I truly am glad to have you as one of my students at the academy. I believe you have more than earned this small token of my appreciation. पैसा दे रहा है भाई, पैसे के लिए अपन तो कुछ भी कर सकते हैं। I hope that you will always stay just as wonderful as you are now. Okay, I am always wonderful. You formed a close bond with. Oh भाई, bonding शॉन्डिंग चल रही है। But let's see, और कुछ dialogues है इसके पास। I am so glad that you came to you. Okay. तो इसके जो डायलॉग्स है एग्जॉस्टेड हो गए। तो लेट्स गो आउटसाइड और बाकी जो क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं वहाँ पर जाके देखते हैं। तो हम एंट्रेंस हॉल में जा सकते हैं, कैफेटेरिया पे जा सकते हैं, स्कूल यार्ड में जा सकते हैं। स्कूल यार्ड में तो मेरे ख्याल से लग रही है बैटल होने वाली है। कैफेटेरिया चलते हैं भाई। लड़ाई झगड़ा करके ना मैं परेशान हो गया हूँ। पिछले कितने एपिसोड से मैं सिर्फ लड़ाई ही कर रहा हूँ। ओके, कैफेटेरिया में मिस्टर आरवन सिंह पटेल है। चल रहा है भाई। ये बच्चे लोग कितना खा रहे हैं यहाँ पे। जोरुआ भी है यहाँ पे। मील पावर्स। You grabbing something to eat too? Man, you sure did give me a beating in that Academy Ace tournament. Seems like all of my closest buddies are in another league, you know. I mean, look at you. You just up and become champion in your first year to boot. You know, that's pretty amazing, right? And then there's Namuna. 2 top marks in every class at the school, and she's champion rank too. And here I hear Penny's got some kind of offer to work for the Pokemon League or something. I seem to be the only average बेचारा गधा। You're great at cooking. चलो भाई, सैंडविच बनाओ मेरे लिए। Nah, I mean, it's just like a hobby really. I only learned how to do the basic because my dad wasn't around to cook for me. अच्छा. Okay. Wait, my dad. See, now that Marble Stiff is doing so much better, and since the treasure hunt is still going and all, I've been thinking of a new goal to find myself a dad. And I guess you've really got to start by knowing where you come from, which means I should learn more about my dad, right? Oh, he was a student at this school once too. That's what I heard. अच्छा. ओके प्रोफेसर, तू यहाँ पे पढ़ा है, मुझे नहीं पता था। आई एम गोना सर्च द होल स्कूल फॉर इन्फो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही रियली इज। ओके, तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई है। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन लिटिल बडी। एनीवेज लेट्स सी। ओ भाग गया साला, देख रहे हो। ओ कॉम्बी भाई, क्या हाल चाल है? मेल कॉम्बी है भाई, मेल लोग से तो अपन बात नहीं कर। ओ वेलकम होप योर स्टडीज आर गोइंग ओके। व्हाट विल यू हैव टुडे? ओके, 5 अलार्म सैंडविच। मुझे ना एक सैंडविच देखना है जिसमें स्पार्कलिंग पावर हो, उसके लिए काम आता है शाइनी हंटिंग के लिए, ये मुझे पता है। व्हाट यू गेट व्हेन यू मिक्स अ रोटम विद अ माइक्रोवेव, पता है भाई अपने को, इलेक्ट्रिक टाइप। दिस इज अ फ्रूट राइट? एप्लिन है क्या यहाँ पे? एनीवेज लेट्स गो आउटसाइड। वेयर डू यू वांट टू गो? ओके, वी वांट टू गो टू। ओ फिर से डायरेक्टर के ऑफिस। व्हाट, क्या हो गया बुड्ढे को? अब भी तो मिल के आया हूँ। ये बात कर रहा था तो कर नहीं रहा था मेरे से।
ओ R1 सिंह यहाँ पर आ गया है, R1 L1। ओके, क्या मांजरा है देखते हैं। Zio boy, did you pick a great moment to stop on by? Take a look at this. Okay, this is supposed to be a sample from my dad's research from back when he was student. That's what Dr. Clavel here told me. He's been helping me out. Whoa, Turo was a student at this when Turo was वो बोल रहा हूँ मैं अभी when Turo was a student at this academy. I was still a mere researcher myself. Okay, तो डायरेक्टर क्लेवल भी रिसर्चर था. Among my peers, it was already being bandied. Okay, नहीं पता क्या होता है ये. About that, an astoundingly gifted young man was studying at UV Academy. So, he really was an amazing, always amazing, right from the start, huh? Oh, I guess I never really questioned it, but why is your office full of all these equipments? Oh हाँ, मैं भी सोच रहा था यार, इतने सारी चीजें क्यों है इसके ऑफिस में. So you have finally noticed, have you? This room was once your father. Okay, okay, Turo का research lab था ये. Ah, nice, it was. From what I've heard recounted, he apparently would become so absorbed in his research that he hardly ever returned to his dorm room. He spent most nights sleeping here. In fact, acha, I also find myself more at ease surrounded by such research equipment. So I took the liberty of adapting the room to serve as my office. I never knew. All these pieces of my dad's life, they were right in front of me this whole time. I spent so long trying to not to think about him that I never even noticed until now. Thanks for telling me about this, Dr. Clavel. Director Clavel. Dr. Clavel ही बोल रहा हूँ. And Zio, thanks for being here with me to learn about it too. Okay. Master Anvan, I also intended to explain about these trophies here. And he already gone. Rather hard to pin down, isn't he? Off like a flash as soon as some new thought crosses his mind. My dear Turo, I think the son of yours takes after you a very great deal. But ये तो रिसर्चर नहीं भाई, ये तो बावर्ची निकला. Anyways guys, चलो देखते हैं आगे क्या होता है. Alright guys. Anyways, यहाँ देखते हैं. If you ever need help with a school related matter, I should be happy to lend an ear. Okay, तो इसके पास डायलॉग बाजी बचा नहीं है. Let's go. Where do you want to go? एंट्रेंस हॉल में क्या चीज़ है यार, बार बार मुझे एंट्रेंस हॉल में जाने के लिए बोल रहा है. वो नमूना है यहाँ पर. स्कूल यार्ड में जाते हैं. लेट्स सी नमूना क्या कहती है. कहाँ है भाई तू? कितने है? ओह, गधा घोड़ा सब है यहाँ पर. ओ भाई 11 डोज. अबे है कहाँ नमूना ये? व्हाट? मैं क्या अंधा हो गया क्या? ओह, ये वाले टीचर भी है यहाँ पर. क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल है? डेंड्रफ नाम है इसका. Oh, so new to it. Muscles sure are great, don't you think? Okay, muscles बनाना है इसका. क्या लगती है भाई ये, एकदम मज़ेदार. ऐसा लग रहा है फोर्टनाइट की कैरेक्टर है. पता है फोर्टनाइट में इसी तरीके से बनता है. बट नमूना है कहाँ भाई? यहाँ पर नमूना नहीं दिख रही है मुझे जाने के लिए. ये ओ भाई मैं अंधा हूँ सीरियसली. प्लीज़ डोंट बैटल मी प्लीज़. Oh, hey Zio. Great timing. I've been having the hardest time lining up my opponents to battle. But now I found you in the schoolyard, no less. It would be silly not to battle. Would you say sure? चलो कर ही लेते हैं क्योंकि ये स्टोरी आगे बढ़ाना पड़ेगा. I knew I could count on you. Okay, अच्छी बात है, अच्छी बात है. अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच भाई. बैटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें. 1 घंटे हम लोग बैटल करते रहे. हाँ, गुड स्टफ. Gotta step up my game, so I'll be ready at any time for the Academy Ace tournament. I know I sprang my battle fever on you out of nowhere. Thanks for being up for it. Okay, अच्छी बात है भाई. टाइम वेस्ट नहीं किया हम लोगों ने. Anyways, let's go. और मिराइडॉन को मैं राइड नहीं कर सकता यहाँ पे. थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे पैदल चलवाने के लिए. यहाँ पे वो भी हो सकता है ना, TM मुझे दिख तो नहीं रहा, बट कोई बात नहीं. लेट्स गो. ऑलराइट. ओ कैफेटेरिया में वापस जा सकता हूँ मैं. चलो एंट्रेंस हॉल चलते हैं एक बार.
बहुत देर से पिंग कर रहा था एंट्रेंस हॉल जो है। मुझे पता है गाइस ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, बट एंट्रेंस हॉल में क्या किससे बात करूँ मैं? ओ, ये प्यारी प्यारी लड़की है यहाँ पर। ओह हे जियो मिरियाम, sorry we are looking were you looking for me? I've been always in the nurse office lately. Did you need something from me? Yes, क्या चाहिए मुझे? मुझे भी नहीं पता क्या चाहिए। Are your Pokemon hurt? Just a second. अच्छा ये हील करती है। Here you go, a little first aid. You must really be having an adventure out there, judging from those scraps and जो भी है। जी मुंडी हिलाते रहते लिंक के जैसे। हाँ, oh yeah, I guess it is pretty unusual for me to be out in the nurse office like this. Well, I'm actually doing a bit of study. अच्छा, though I will try my best for the health teacher certification exam one more time. Wow, amazing. आप तो महापुरुष हो, बल्कि आप पुरुष ही नहीं हो। Just so you know, it is totally not because I'm inspired by certain somebody working hard at the treasure hunt. मेरी बात कर रही है। Well, maybe I'm just a little bit, so you know, thanks, yeah, he. Okay, अच्छी बात है। Oh, my break time is almost over. I know you will be cheering me on, CEO. I feel, अच्छा, okay. मरियम के साथ भी हम लोगों ने थोड़ा सा रिलेशन बना लिया। अच्छा लगता है मुझे ऐसे रिलेशन बनाने के लिए। Anyways, क्या है? Write down. Okay, nice. I don't think कि मुझे यहाँ पर कुछ है, बस मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का जो है ना वो चीज़ है। But let's go towards कैफेटेरिया। वो नर्स के ऑफिस में भी जा सकता हूँ भाई। बहुत सारी स्टोरी मैंने मिस कर दी है मुझे लग रहा है। 4 करोड़ घंटे का एपिसोड बनने वाला है गाइस ये। Anyways, let's, ओ नमूना यहाँ क्या कर रही है? ओए नहीं, I don't want to go anywhere. Okay, let's see. नमूना सिंगारिया ये किस लड़के के साथ खड़ी है भाई? अच्छा नहीं लगता मेरे को ऐसा। So you are good for a battle, right? Great. Meet you at school yard in a minute. Hold up, you're Namuna, right? Like the student council president, the Namuna. Yeah, that's me. Ha. Yeah, maybe some other time. Okay. तो सारे लोग इससे डरते हैं बैटल करने के लिए। Zio, hola. Who was that? Your new boyfriend. Oh, don't know who he was. अच्छा. I was just munching my sandwich and I heard him bragging about his stuffed Pokemon. So I invited him to battle. अच्छा, बड़ी होशियारी मार रहा था। I wonder what Pokemon he's gonna use. Can't wait to see. तेरे साथ लड़ाई नहीं कर रहा है वो, हैं? होशियार चंद। Wait, I forgot to get his contact info. How are we supposed to plan? तरक लिया भाई वो पतली गली से। Oh well, I'll make sure we battle next time I run into him. Anyways, guess you came to get some grub, huh? Well, I'm not one to stand between someone. Okay, catch you later. Okay. तो ऐसे ही फालतूगिरी करते रहेंगे अपन। अच्छा लगता है मुझे फालतूगिरी करना, क्योंकि अपन फालतू पकड़। ओह, स्कूल के स्टोर में भी कुछ है। मिरियम के पास जाएं कि स्कूल के स्टोर पे जाते हैं? स्कूल के स्टोर पे जाते हैं। मिरियम के पास पता नहीं क्या होगा, प्यार मोहब्बत की बातें ज़रूर करेगी वो। ओके, स्कूल स्टोर में कौन है? किससे बात करना है मुझे? नमूना से बात करना है क्या? ये पीछा ही नहीं छोड़ रही यार। Better stock up real good on Pokeballs while I'm here. Zio. Oh my gosh, listen to this. Remember that guy from the cafeteria? I ran into him again in the entrance hall. So I asked him to battle, but he said no, obviously. He was like, what's the point? You're a champion and a battle bitch. You would drag me. Acha. I don't get what he meant. I mean, you can have fun battling even if you lose, right? Yeah, you can. मुझे तो हारना अच्छा नहीं लगता, but मैं बहुत हारता हूँ। For real, I mean, sure, no one loves losing, but it's definitely not pointless. It teaches you stuff. Man, Pokemon battles can get so complicated sometimes. Oh, and I wish he hadn't called me a whiz. I work hard at this stuff. It's not like it all just come natural to me. Sorry about that. Like, throwing Pokeball obviously doesn't come naturally to me, for one thing. Okay, I think I need a mental reset. I'm gonna go find someone to battle. Okay, see you soon, Zio. See you soon in honeymoon. Anyways, तो यहाँ पर और क्या बचा? Oh, welcome. Okay. Browse my shorts of handy items. Okay, ये भी बेचती है।
ओ मोमो मिल्क भाई, मोमो मिल्क मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे मोमो मिल्क लेना। ओके तो मेरे पास क्विक बॉल है, डस्क बॉल भी है, अरे अच्छा हाँ मैंने सब खरीदा था। तो इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी बात है इसके पास है तो। ओके नाइस, बैठने का नहीं, चोरी चोरी चुपके वाला। लेट्स गो टू नर्सेस ऑफिस। ओ क्लासरूम में भी जा सकता हूँ। ओके भाई मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके ना मुझे ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। हाँ मेरी एम, क्या हाल चाल है भाई? Hey there, come on in. Everyone's welcome in the nurse's office. Oh Zio, I'm glad you are here. I have some good news. You're not gonna believe this, but I passed the health. Oh my God! Congratulations, Miriam. Ah. Oh भाई अच्छा लगा सुन के. Thank you so much. I saw I saw you pushing yourself real hard into your treasure hunt. That really inspired me. Oh, of course, most of the credit of my success goes to my own hard work, though. Yeah. Thanks for giving me a push. I need to try again, Zio. Oh, 10 max revives? क्या बात है भाई? But they tell me there's no room to add new classes this year. Hmm. So I guess I'll keep being nurse medium for a bit. Just you wait though. I'll be standing in front of the class at the academy before you know it. Ah, I will teach you all you need to know about health. I bet I will make a great teacher. I can't wait to see you in the class. Okay, तो एक और क्लास खुली है, तो क्लोज बॉन्ड हमारा बन चुका है मिरियम के साथ। अच्छा लगता है मुझे ऐसे क्लोज बॉन्ड बनाना। सेल्स ऑलराइट, लेट्स गो टू क्लास ए 1A, माई हीरो एकेडमिया का क्लास 1A। कोई तो बोल रहा था इसमें बहुत सारे रेफरेंस है MHA के। अरे यार ये फिर आ गई है, दिन भर बैटल बैटल बैटल। देयर यू आर Zio. I had a feeling you would turn up if I hung over here for a while, and lo and behold, I was right. Well, now that I found you, we'll swing my room and have a chat. Oh भाई रूम में बुला रही है। मेरे रूम में कि इसके रूम में? ये क्या डब्बे पड़े हुए हैं? ओह पॉमॉट है इसके पास। Ta 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 cha! Welcome to Zona Nimona. It's so tidy. Oh, thank. Wait a second. I know we have been to your room before, but have I ever had you over here? Anyway, listen, Zio. You know how I really like Pokemon battles. Like really like them. Yeah, sure you do. मुझे पता है भाई तेरे को दिन भर बैटल करना है। Cool, and yeah, you know how when you really like something, you dive in deep. That's what I did with Pokemon battles, and I just kind of become a champion. But then I find out that that's pretty special. That normally it is not as simple for most people. People who would tell me to my face that I would only manage it because I have some innate gift or because I was raised differently or whatever. And suddenly I started to feel like there was this invisible wall between me and everyone else. So I started going easy when I do battle with my friends. I just wanted everyone to have fun. Oh, but don't worry. I'm not doing that anymore. I'm giving 100% all out, okay? Especially since I'm lucky enough to have an opponent around who can beat me even when I'm full hardcore mode. In full hardcore mode. So just promise me one thing, Zio. Promise me you'll always stay my equal. You and me, true rivals. You know it. Hey, you are the best, Zio. Thank you. Oof, that got pretty personal. Little bit embarrassed over here. चलो भाई पप्पी वप्पी दो। Anyway, since we are equals, I gotta start having you over as much as we hang out, okay? So feel free to buzz in. तो मैं इसमें जा सकता हूँ। Anyways, get ready for the game. Okay. अच्छी बात है। नमूना के रूम में भी जा सकते हैं हम लोग। बातचीत करना है तो कर सकते हैं हम लोग। I am making a Pokemon. Some for tablespoon means different people. Okay, अच्छी बात है भाई मिस नमूना सिंह। Where do you want to go? Let's see, कहाँ जा सकते हैं? नमूना जॉब रूम में हूँ मैं और कहीं जाने के लिए ऑप्शन नहीं है। ओके, ऑलराइट। चलो भाई अब हम लोग क्लासेस ले सकते हैं। लेट्स सी।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये वीडियो 1.5 घंटे की भी होगी, बट मुझे कंप्लीट करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। यस, आई वांट टू टेक क्लासेस, लेट्स सी। बायोलॉजी के 2 क्लासेस है। ओ माय गॉड, आई विल हैव टू विजिट द क्लास। ओके, हिस्ट्री पे चलते हैं। आप लोग हिस्ट्री के लिए भी होता है। यू लाइक हिस्ट्री विद मिस रायफोर्ड। क्लास विल बिगिन सून, डोंट बी टार्डी। ऑलराइट, लेट्स सी हिस्ट्री में क्या होता है और कितना लंबा जाता है डायलॉग, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वीडियो जो है किस तरीके से बनने वाली है। बट लेट्स होप कि छोटी हो। ओहो, ये हुई ना बात भाई, अच्छी वाली टीचर। ओह, आई सी वी हैव सम न्यू स्टूडेंट्स हियर विद अस टुडे। माय नेम इज Rayford, I don't know. I will be the one to impart knowledge of the past to your little minds. Okay, history is a wonderful thing, truly splendid. The lives of our ancestors throughout history force a path to the present in which we live. Today, we shall learn about the most mysterious location in all of the Paldea, the Great Crater. As you are all aware, a massive crater known as the Great Crater of Paldea exists in the heart of Paldea. Actually, Paldea नहीं है. The area inside the crater is called Area Zero, and research of its geological strata and material composition has shown that the crater is in fact over 1 million old. क्या बात कर रहे हो? 1 मिलियन साल पुराना क्रेटर है वो। It is long believed that a certain something rested at the bottom of this mysterious crater. Okay. परफेक्ट टाइमिंग टू मेक योर आई कॉन्टैक्ट, यंग मिस यू। तो बेसिकली मेरे को लग रहा है कि एक और चीज़ जो है, एक और पोकेमॉन है जो यहाँ पे था पहले, मुझे नहीं पता। वेट, व्हाट एग्जैक्टली वाज बिलीव इन द रेस्ट इन द डेजर्ट इनसाइड एरिया ज़ीरो? ट्रेजर, स्नोलैक्स, पोकेमॉन सेंटर, ट्रेजर करते हैं। दैट इज करेक्ट, यू आर surprisingly clever one, aren't you? I see you did your homework prior to coming to my class. That's right. Some believe that the treasure more valuable than anything in this world rested in the depth of the Great Crater. So much of the dreams of the treasure hunting, though, as lab has been built into those very same depth. Oh, and before I forgot, you would all do well to remember that the Great Crater and the Area Zero are both off limits to all those who have official business there. Do not dare entertain the foolish notion of galvanizing our areas in search of riches. Okay, हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं वहाँ पर। मुझे एक बार और जाना है क्योंकि वहाँ के सारे जो पोकेमॉन्स हैं उनको कैच करना है, स्पेशली जो हमारे फ्यूचरिस्टिक वाले जो पोकेमॉन हैं उनको। It is no place for children dreaming of treasure and adventure. Besides, if it were at all possible to investigate the area, I would surely be the first to do so. Okay. Oh, is there the time already? I must have gotten swept up in filling your minds with knowledge. This ends today's lesson. We will unravel more of the history's enigmas together next time. Alright, तो हमें एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट पता चली कि 1 मिलियन साल मतलब 10 लाख साल पहले वो क्रेटर बना था, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स सी। हिस्ट्री के 2 लेसन्स है। चलो हिस्ट्री के ही कर लेते हैं आज। रायफोर्ड के पास चलते हैं। अच्छी लगी मेरे को रायफोर्ड का डिज़ाइन बहुत सही लगा। क्लास विल बिगिन सून। तो वही है, ये राज पे राज खुलने वाला है भाई। अच्छा लगता है मुझे राज। आ गई मिस रायफोर्ड। Greetings, my little student. Whatever you did yesterday is now a part of history. Today we will continue to unravel the marvels of the history has presented to us. About 2000 साल पहले, this region came under the rule of Paldean Empire. Historical account describe the Paldean Empire as being quite the dictator. The emperor also zealously believed the legend of the treasure that rests deep inside within Area Zero. I must mention that the civilization of our ancestors were not as developed as ours in today. People back then were far more likely to believe in mysterious legend, magic, and beings beyond human comprehension. In an attempt to gain the power to stand against Paldea's neighboring country,
the emperor sent people in droves to join the hunt for the fabled treasure of Area Zero. Okay. Perfect time. Okay, अच्छी बात है. Approximately how many years ago was it that the Paldean army began to rule? 2000 साल? 2000 years? That is correct. You are surprisingly clever, aren't you? I see you are listening intently to my lecture. भाई अपन बहुत attentive है. The answer is about 2000 years ago. That is when the great era of expansion. However, it is said that not a single adventurer sent out by the temperature ever reached the depths of Area Zero. But हम लोग तो जा चुके हैं ना? Was it a punishing journey itself that barred their way, or perhaps some unknown creature? The resounding failure of this great area of exploration almost certainly heightened the air of mystery surrounding the crater. Oh, what I would not give to explore the areas here and test it. Okay. I suppose I can only hope for the swift invention of the time machine. What? इसको पता नहीं है क्या टाइम मशीन है वहाँ था मतलब. Is that the time already? Okay. टाइम ख़त्म हो गया और नेक्स्ट क्लास में जाना है. अभी 2 क्लासेस है अभी, मतलब एक क्लास है तो एक क्लास में हमें और जो है डिटेल्स पता चलेगा. स्पेशली हमें अभी इस क्लास में पता चला कि 2000 साल पहले जो है यहाँ का एम्पायर जो है आया था. ओ भाई, क्लास 3 है कि 3 क्लास और है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. लेट्स गो. धुंध भी तार दी. ऑलराइट, तो धीरे धीरे करके हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल रहा है, जो कि अच्छी बात है. एक्चुअली मैं जनरली इतना ध्यान नहीं देता हिस्ट्री के ऊपर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं. ओके, तो सेम डायलॉग बोल रही है तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा. एज यू शुड रिमेंबर फ्रॉम आवर लास्ट एरिया जीरो's great era of exploration began about 2000 years ago. The era lasted for approximately 1000 years, but not a single soul was able to venture all the way to the deepest reaches of Area Zero. Having poured much of its human and financial resources into the exploration of Area Zero for so long, the Paldean Empire fell into decline. अच्छा, खोजते खोजते उनकी ऐसी तैसी हो गई. 200 years later, or 800 years ago, the empire and its surrounding nations united into one entity. अच्छा, that was the formation of Paldea as we know it. अच्छा, okay, 800 साल पहले. हाँ, सब लोग मिल गए, आसपास के लोग, आसपास के मतलब जो एम्पायर थे. Yes, this very academy where you are now filling your young minds with no knowledge. अच्छा, okay. In fact, the school building, though, certainly have undergone repairs through the years. It's just as it was when it was built. Okay, nice. तभी थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक नहीं है इन लोगों का बिल्डिंग, क्योंकि ये बहुत पहले बना गया था, थोड़ा सा रिपेयर किया गया है. This very structure is a piece of history. Things of old and truly splendid. I would certainly prefer it not to have the Pokeball portion, though a relative new addition. Okay. अच्छा, तो पोकेबॉल जो बड़ा सा बना है वो नया बना है, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं. और रेडी हमसे सवाल पूछेगी, हाउ मेनी इयर्स वाज द एकेडमी? 800 साल. करेक्ट. ओके, सेम डायलॉग बोल रही है. दिस एकेडमी वाज कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली 805 साल पहले. टू बी प्रिसाइज, इन अदर वर्ड्स योर एकेडमी इज 805. ओके. A state was uniquely innovative, as such as people will say. Okay. Those seeking knowledge need look no further than the grapes of Paldea. That's right, they were referring to UV Academy. It is said that this program of sort was even used outside the Paldea region. Oh, okay. Time हो गया. तो lesson 3 जो है हमारा ख़त्म हो गया है. My first teacher, if you know what I mean. उसमें एक वर्ड मिसिंग है जो उन्होंने बोला उसमें. लेट्स सी और क्या है भाई. गुड इवनिंग मिस यू, व्हाट क्लास वुड यू लाइक टू टेक? हिस्ट्री मिड नाउ. ये क्या चीज़ है भाई? यार बहुत सारी है यार चीज़ें. ओके, चलो चलते हैं. हिस्ट्री मुझे खोलना ही पड़ेगा. डोंट बी टारती, डोंट बी टारती. मिड टर्म देखते हैं क्या होता है.
मुझे मेन जो है ना लेजेंडरीज के बारे में पता करना है। आप लोग बोल रहे थे लेजेंडरीज के बारे में पता करो। ओके, मिड टर्म चालू हो गया। समन योर हिस्टोरिकल नॉलेज फ्रॉम द डार्क रेसेस ऑफ द माइंड एंड एक्सेस आंसर द क्वेश्चन। एग्जाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन सेंटर ग्रेट क्रेटर ऑफ पैल्डिया? ओके, what was the long believed rest? Okay, treasure. जो मैंने आंसर दिया भैया। How many years ago did the Paldean Empire begin to rule this region? 2000 और फिर 805 obviously academy बना था। तो seeking dash need look no further knowledge. The time is up. Putting your last question was a freebie. Even the least capable of you sure against okay, अच्छी बात है. So ends your midterm, you can ask your scores on front desk. Okay, तो मैं front desk से अपना रिजल्ट दे सकता हूँ. Obviously 100% मार्क्स मिलेंगे हम लोगों को. बहुत पढ़ाकू लोग हैं अपन. If you get to get a test away, doesn't it? Let's take a look at your result. You must get 3 questions correct to pass. मैंने 5 आंसर किए हैं. Okay, history में you answer 5 out of 5 correctly. There's a passing score. Here's the reward. Okay, तो मैं अच्छा एस कैंडी मिला है यार मुझे. अच्छा कैंडी तो दो यार. ऑलराइट, और हिस्ट्री बचा है क्या? ओह, हिस्ट्री का 4th लेसन है. हाँ, लेट्स गो. यू वुड लाइक हिस्ट्री विथ मी? यस. ओके, चलो चलते हैं. अब वही है, ये बस सेम बकवास करने वाली है, तो वही है. काटने का टाइम आ गया भाई. अब something continue the same imaginary concrete has been expected to drill my. I suppose changing things up for the fun and variety may be a good idea from now and then. So allow me to tell you a old fairy tale that has been passed down in Paldea for generations. Once upon a time, there was a king who very much enjoyed collecting treasure. He was particularly fond of treasure from other countries. One day, a merchant from the east heard rumors of this king and came to meet him. The merchant laid out 4 treasures in front of the treasure-loving king. The 4 treasures were as follows: a vessel, a sword, a set of tablets, and set of beads. Okay. Seeing such rarity before him, the king leaped for joy. He showered the merchant with gold coins and claimed all 4 treasures. Perfect time. Okay. I said that one of the treasure was set of tablets. What do you think these tablets were? Wooden planks of writing on a handheld electronic device. Medicine that can chew. मेरे ख्याल से ये होना चाहिए यार. Correct. The daily pursuit of knowledge serves you well. These particular tablets were wooden and used as a writing medium in the East in the ancient time. As you may know, they fell out of the popular use as paper became more universally available. For the king to consider this paper substitute treasure, they must have been a super quality. That, or perhaps they have some amazing profound teachings written on them. So the king obtained this 4 treasure, and on that very night, it is said that the terrible disaster rained upon his castle, reducing it to rubble. What? Oh, okay. भाई इंटरेस्टिंग हो गई अभी स्टोरी. मुझे देखना है कि नेक्स्ट क्लास में ये आगे का क्या बताती है उस स्टोरी के बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये नॉर्मल लेजेंड नहीं है, ये एक्चुअली रियल में हुआ होगा इस तरीके का. ऑलराइट, लेट्स गो टू हिस्ट्री लेजेंड. Let's see. Okay, alright. I trust that you all remember our lesson before the midterm concerning the great creator of Paldea and its interior area's hero. This mysterious creature captured the imagination of many, including the former Paldea. 200 years ago, a group of explorers claimed to have finally reached its depth. Okay, 200 साल पहले. The name of the team the team is said to have been made up of Paldea's best and brightest, skilled battlers
brilliant researchers, talented individual of all kind. Among the list of them, your team members, was the name of man who was an author and brilliant nature historian, Heath. Oh, Heath करके Heath मैंने सुना है कहीं पे. After returning from the expedition to Area Zero, he used his literary talent to record the events of expedition and publish them. Okay. अरे what was the name of the team that first made the deep? Oh यार मैं भूल गया. सर्वे कोर्स ही होना चाहिए यार. एरिया जीरो एक्सपीडिशन यार मैं तो ध्यान नहीं दिया एक्चुअली. Incorrect. Though I will admit that the expedition and survey course may take part in very similar activities. Expedition is the answer. The record of their activities written by the expedition member Heath can be found. Okay, expedition can be found in bookstores and like even today. The records are known as Violet Book. हाई वायलेट बुक तो हम लोगों ने वहाँ पे लगाया था ताकि हम लोग जो है टाइम मशीन को बंद कर सके. At the time of entire region of Paldea was absolutely buzzing about Area Zero. The Violet Book was so popular that practically everyone had a copy. However, the book itself was full of fantastical description and illustration of things that could never be thought of as real. The masses began to call Heath a liar. Even the truth of the expedition making it to the bottom of the crater was called into question. The Violet Book was condemned to shelves for used books as paranormal. Okay. तो ये एक्चुअली उस तरीके का केस हो गया जब वन पीस में एक नोलैंड करके था. थोड़ा सा स्पॉइलर टाइप का है पर पता नहीं स्पॉइलर होगा कि नहीं कई लोगों के लिए. नोलैंड जो था उसको भी लायर कहा गया था और उसने बहुत एक बुक लिखी थी. उसमें बुक लिखी नहीं थी एक्चुअली, उसने स्टोरी बताई थी और उसने बहुत सारी मस्त चीज़ें बताई थी जो कि वन पीस में आगे रिवील हुई थी. भाई बहुत सही जगह थी भाई और वो आर्क मेरा वन ऑफ द फेवरेट है. उसमें दिस इज अ कॉपी ऑफ वन ऑफ द बुक शेल्व्स ऑन द जस्ट फील फ्री टू हैव इट. अरे यार मुझे ओके तो ये क्लास भी ख़त्म हो गई है, अच्छी बात है. ओके तो हीथ जो था वो 200 साल पहले गया था एरिया ज़ीरो के सबसे बॉटम में और उसने क्रीचर्स के बारे में भी इलस्ट्रेशन और वो सब चीज़ें बताई थी. हिस्ट्री 6 करते हैं. ओके फाइनल टर्म हो जाएगा मेरे ख्याल से उस पर होगा. क्लास विल बिगिन सून. ओके तो फाइनल टर्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, तब हमें लेजेंडरीज के बारे में पता चलेगा मे बी. आई होप कि 6 क्लासेस काफ़ी होंगे. Greetings my little student, whatever you did yesterday. अरे बार सेम डायलॉग नहीं बोलने का, ठीक है. In our last class, I taught you about the Area Zero expedition of 200 years ago. Correct? Alas, 200 years ago is not that long ago. Not that long ago at all. How unfortunate that our history lesson must march so inexorably towards the future. Would it not be more of an adventure to march towards the past instead? Indeed. To start from our present and study history in reverse. I think it would. Okay. So you agree with me 2 years ago. However, I'm afraid I risk incurring the wrath of our dear director if I stray from the curriculum. So I suppose I have no choice but to let the flow of time carry us towards the future. In this last class of ours, I shall fill your minds with the history of the terrestrial phenomena. The technology behind Terra Orbs has its origin in Area Zero. Even after the Area Zero expedition supposedly reached the crater's deepest depth, others continued to explore the area. And around 140 years ago, Pokemon cloaked in mysterious light were discovered. अच्छा 140 साल पहले. As you may have already guessed, these were in fact terrestrialized Pokemon. However, अच्छा इसलिए ग्लो करते हैं क्या वो लोग? When they have discovered this Pokemon brought them out of the Area Zero, the light faded and the terrestrial phenomena remained a mystery for some time. However, 10 years ago, this might as well be present day. A certain someone you have definitely heard of unraveled the mystery. तो प्रोफेसर टूरे के बारे में बात कर रहा है. ओके फिर से क्वेश्चन पूछेगी. तो what is the name of the famous professor who unraveled the terrestrial phenomena? Turo? Correct. To think that you and you could correctly answer the
Approximately 10 years ago, a professor named Turo unraveled the mystery of terrestrial phenomena. He discovered that the shining crystal down in the area zero, or rather the energy that emit, is what causes the Pokemon to terrestrialize. This led the professor to invent Terra Orb technology and develop a practical use of it. This technology was then shared with both the Pokemon League and our academy. Rumor has it that the Dr. Clavel was one of the researchers on the professor's team. Alas. This story is much less exciting now than someone we all know appears in it. Modern history truly is dull, isn't it? Okay. तो इसके और क्लासेस बची है भाई. लेजेंडरी वाला कब आएगा? मैं 4 साल से वेट कर रहा हूँ यार. ये स्कूल का चैप्टर जो है ना बहुत गंदा है ऐसा लग रहा है मुझे. और ऑलरेडी मेरे ख्याल से मेरे को 40 मिनट हो गए हैं. लेट्स सी. मेरे ख्याल से हिस्ट्री का फाइनल लेसन है. वाह. ओके, तो किसी ने कहा था मुझे कि आपको ये थोड़ा सा कर लो, फिर उसके बाद ना आपको ये हॉल में मिलेगी, तब बताएगी जो हमारे लेजेंडरीज है उसके बारे में. Greetings, my little student. It is time for our final examination. Summon your historical knowledge with the dark recesses of your mind. Okay, what is the area within the great? Same चीज़ें पूछ रही क्या? Area 0, obviously. Academy 805. What did you say? Which of these did not appear in Paldean fairy tale? About वेसल हुआ, सेट ऑफ टैबलेट्स हुआ, फोल्डिंग फैन होगा. विच एरिया एक्सपेडिशन मेंबर रोड अ रिकॉर्ड ऑफ द टीम्स टीथ. ओके, हाउ मेनी इयर्स अगो डिड प्रोफेसर टूरो इन्वेंटेड टेरा ऑर्ब्स? 10 years. योर टाइम इज अप. ओके, अच्छी बात है. 3 क्वेश्चन आंसर करने थे. The history test was included, and our final exam you may ask your score at the front desk. Okay, हिस्ट्री के लेसन्स तो हम लोगों ने पूरे कर लिया. लेट्स सी कि ये हॉल में मिलती है कि नहीं. मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बाहर जाके अंदर आना है, फिर बाहर जाके. ओके, ये मुझे पता है भाई. मुझे बस प्राइज दे दो मेरा. गिव मी माई प्राइज. ओह, 5 मीडियम कैंडीज. ठीक है, थोड़े लो लेवल के पोकेमॉन्स जो है उनको लेवल अप कर सकते हैं. बट मुझे मिस रायफोर्ड कहीं नहीं नज़र नहीं आ रही है. और यहाँ पे कहा गया है कि कोई बुक है. अच्छा, ये अलग अलग बुक्स है क्या? थोड़ा सा डिफरेंट लगे. द ग्रेट नाइट क्लासेस अवेलेबल. एक सेकेंड गाइस. अबे छोड़ना लड़की. ओ, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? व्हाट आर यू डूइंग मैन? यो चैम कमिंग टू हिट द बुक्स. या एक्जैक्टली. जुल्फे हिला ले बस तू. Seriously, you are already so good at everything else. Couldn't you just slack off a bit for me? Oh, you wanna know why I'm here? Yeah, I'm still working on my own little treasure and trying to find myself and all. While I was here in the entrance hall digging through my dad's research reports, I found this on one of the bookshelves. The book was so precious to my dad that he kept a copy of it in the lighthouse lab. The Violet book. That's what it is called, right? This is my first time really reading the bits that aren't about the Herba Mystica. They are amazing. I mean, it all sounds super fake, but it's got all those cool pictures and भाई तू तो जा चुका है हमारे साथ. Like, look at this entry here. What is that? Okay भाई, what is that? ये चीज़ नहीं था यार. While separated from the research team in the creator's depths, I found a strange entity. Whether it was a Pokemon or even live at all. Okay, ये क्या है पता नहीं. I know not. It bore a small with layers. Bore a shell. Shell होगा क्या होगा पता नहीं. With the layers of overlapping hexagons. Okay, hexagons and glee brighter. Still then it's well done. Or it is a mysterious gallant dusk. Oh भाई,
The text on the page is smudged and blurry, and every copy of the book is unseen. Seems kind of suspicious, right? Because the whole book is full of unbelievable story और उसमें ओके तो मुझे लग रहा है यार ये DLC के लिए ये लोगों ने तैयार किया क्या? And after everything we saw in Area Zero, well, it makes hard to say all this nonsense. Okay, in fact, I think it might have been this book that made my dad want to become a researcher. I bet he got so fixated on the future Pokemon, they made him want to go see them. Okay, वो जो अंडे की आकार का था वो क्या था भाई? Wait, hold on. Isn't my dad's time machine the whole reason the future Pokemon ended up here in the first place? This book is from way before he made the time machine, but he mentions future Pokemon. Isn't it kind of? हाँ यार ये थोड़ा सा अजीब है कि कहा जाता है कि जिस टाइम पे आपने टाइम मशीन बनाया है उसके आप फ्यूचर में जा सकते हो लेकिन आप पास्ट में नहीं जा सकते टाइम मशीन के. This sus. Oh well, I'm sure it's all anything. My dad believed that nonsense and even managed to make it reality. I guess he really was something. I'm gonna learn from this example and start giving it my all. I've got something I've got to do now, but okay भाई वो तो ये जो है ना भाई स्टोरी के बिट्स जो है हमें धीरे धीरे पता चल रहे हैं. बट यहाँ पे कुछ बुक्स ऐसे निकली हुई है अलग अलग टाइप की. दिस बुक्स एंटाइटल पोकेमॉन नेचर. डू यू वांट टू रीड इट? नो. ओके ऑलराइट. तो मुझे यहाँ पर मेरी जो टीचर जिससे मुझे मिलना है वो नहीं है. तो मैं एक काम करेगा एक मिनट पहले देखिए. वेयर डू यू वांट टू गो करूँ कि अभी हिस्ट्री का कोई और लेसन बचा है क्या? ओ हिस्ट्री के सारे लेसन्स ख़त्म हो गए हैं. तो मैं एक काम करता हूँ बाहर चलता हूँ और एक बार अंदर आके देखता हूँ कि मिस टीचर सिंगानिया है कि नहीं. रायफोर्ड. ओ क्या प्यारी बारिश हो रही है भाई. और ऐसी बादल वाली बारिश मुझे बहुत पसंद है. बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. इंग्लिश हो मेरी बच्ची. और मुझे एक ऐसा पोकेमॉन भी पकड़ना है भाई जो मेरा फेवरेट है. बट आई डोंट नो कि उस गेम में है कि नहीं. ओके यहाँ पे नहीं जा सकते. बट वेयर इज मिस टीचर सिंगानिया. मुझे लग रहा है कि मुझे ये ड्रिफ्टलूम यहाँ क्या कर रहे हैं. थोड़ा सा ऊपर जाते हैं. ऊपर भी जगह है. लेट्स सी. बाल वाला लड़का लड़की है ये. ओ भाई देख रहे हो ये लोग मिमिकियों को चमका रहे हैं ये लोग. ओके आई हैव नो आइडिया कि मैं उस टीचर को ट्रिगर कैसे करूं. ट्रिगर इंसान बनना पड़ेगा. पहली बार मैं इस एकेडमी में घूम रहा हूँ. पता है इससे पहले मैं कभी आया नहीं. ईएम है क्या यहाँ पर? वो सीढ़ी भी है. सिद्धेश्वरी. ओके तो बहुत सारी बुक्स निकली हुई है. आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो. थोड़ा सा क्या बहुत सारा पढ़ सकते हो. आई डोंट थिंक मैं यहाँ से और ऊपर जा सकता हूँ कहीं पे क्योंकि वो लास्ट सीढ़ी थी और मुझे कहीं पे सीढ़ियाँ नहीं दिखा रही है. ये सारे टीचर्स के क्लासेस होंगे अलग अलग. ओह इस तरह गेंगार मी इस तरह गेंगार. और गाइस तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं. हाँ ऐसे करेंगे. वेयर डू यू वांट टू गो. एंट्रेंस हॉल में अभी भी वो दिखा रहा है यार. स्टाफ रूम. हाँ स्टाफ रूम में जा सकता हूँ मैं. राइट लेट्स गो टू स्टाफ रूम. और देखते हैं रायफोर्ड होगी तो उससे बात करते हैं. शायद हमें कुछ लीड्स मिले जाए लेजेंडरीज के बारे में. मुझे पता है कि लेजेंडरीज आप डायरेक्टली भी वो स्टोन. ओह ये खड़ी है टाइम के पास नहीं जाने के भाई. टाइम खोटी नहीं करने. यू आर CEO फ्रॉम क्लास 1A. The way you conducted yourself in my class and answers give me a question. I admit that piqued my interest. You are quite the interesting people, I must say. Tell me, CEO, given a choice, which do you prefer? Things of old or things that are new? मुझे एक्चुअली पुरानी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं. मुझे नई चीज़ें पसंद है. You would answer new stuff to me. You're a history teacher. You would okay. You really are a curious one. Yes, this one may indeed be the of good use to me someday. Okay. गुस्सा हो गई क्या ये? You can disregard that. I was simply thinking out loud.
I enjoyed our little conversation today. You had thanks to you. Okay, तो ये कुछ नहीं बोलेगी मेरे से और व्हाट? तो मुझे लग रहा है कि मुझे के बाहर जाना चाहिए, राइट? एंट्रेंस हॉल में चलते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क अभी भी दिखा रहा है। कोई ना कोई हो सकता है एंट्रेंस हॉल में। मुझे ना एक्चुअली वीडियो देख लेना चाहिए था कैसे ट्रिगर। ओ ये रही भाई हैं। Papa, why we didn't see you from class 1A? Are you perhaps interested in the rest of the old tale I told you in the class? Yes. Okay. Hey, it is convenient that you would take the bait I presented in class. A vessel, a sword, a set of tablets, and a set of beads. After obtaining these four treasures, the king's castle was destroyed. Why you ask? हाँ ये मुझे पता करना था. Because these four treasures were actually four Pokemon. Oh. As these Pokemon were passed from the human hand to hand as a treasure, they slowly became tainted by hubris and greed. Huh. Finally, after coming in contact with rapacity of the king at that time, they awakened as disaster and began to rampant out of control. The king called for renowned Pokemon wielders to defend the country, and after a fierce battle, this incarnation of disasters were quelled. Acha, it is said that these four Pokemons were then sealed away somewhere in Paldea. ओके भाइयों, तो ये चार लेजेंडरीज के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। और जो ये ट्रेजर्स है, ये जो लेजेंडरीज है वो पर्सन टू पर्सन पास किया जा रहा था। और फिर उसके बाद जो किंग था थोड़ा सा करप्टेड टाइप का किंग था। इसके कारण बताऊँ वो जो लेजेंडरीज है रिलीज हो गए थे। और फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुई थी। फिर उसके बाद बहुत घमासान लड़ाई हुई और उनको सील कर दिया गया। So, what do you think? Would you say that the story is just make believe? Would you say this story is just make believe? No. Very astute of you. I have read many historical disaster reports, personal journal, and there isn't much of a support of the truth of this story. If I am able to prove the history's veracity myself, I will sure be let you know. Okay. ओके बट आप लोगों ने कहा था कि मुझे लोकेशंस। ये पैणी सिंह गाड़ियाँ क्या कर रही है यहाँ छुप के? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, गो अवे पैनी सिंह। ओके लेट्स गो। वापस स्टाफ रूम जाके देखते हैं। ओ स्टाफ रूम में कुछ नहीं है क्या? क्लास 2G नहीं यार। ओके मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा एक्चुअली। वापस अंदर आना पड़ेगा लगता है। मुझे पता है कोई नहीं देखने वाला है ये क्लासेस वासेस जो है ना। सुन रही थी लेसी वातिस ताई थी। ओके तो ये तो गड़बड़ हो गई, सीटी बच गई हो गया यहाँ पे। हिस्ट्री की क्लासेस और है क्या? मैथ लैंग्वेज बैटल स्टडीज नो, देयर इज नो क्लासेस फॉर हिस्ट्री। और यहाँ पर ये खड़ी है अभी भी। लेट्स टॉक टू हर। Sio, time has come. What? The cursed treasure, the four Pokemon of ruin. They exist. And I stumbled upon the truth in the newspaper of all places. In an interview piece with a carpenter, no less. The Pokemon wielders apparently used secret stake. Okay, तो सारे जो stakes है वो लेने, वो तो मुझे इतना तो मुझे पता है। Shrines. Okay, there is a separate shrine for each of the four Pokemon, and 8 stake driven into the ground in the areas surrounding each shrine keep the power of the rain at bay. हाँ, okay, तभी अलग अलग कलर्स थे, तो 4 अलग अलग कलर्स थे। In other words, if all the stakes for the given shrine were to be removed, it would release the Pokemon held inside. Don't you think it would be nice to free those Pokemon from the confines of these tiny little shrines? As you. Okay.
इसको पता नहीं है कि वो लेजेंडरी इसलिए सील किया था क्योंकि वो डिसास्टर थे। A kind soul, I see. You are proving truly useful. According to the descendants of the Pokemon wielders in the story, you must have a bond with Pokemon in order to remove the stakes. Okay, मैंने already मतलब 10-12 stakes जो है remove कर चुका हूँ मैं. I'm sure someone as Pokemon savvy as yourself would have no trouble at all with that. You can choose for yourself whether you believe it or not. Make location on this shrine on your map. Okay, shrines के location जो है mark कर रही है map में. I would rather go myself, of course, but skipping out my classes to go adventuring sometimes. Okay, अच्छी बात है. Hey, you can think of it as a part of your treasure hunt. Treasure of ruin are still treasure after all. I hope you will investigate this shrine for you. Okay. ओके वी आर ट्रस्टेड. क्लोज बॉन्ड कब होगा भाई हमारा? जेम्स बॉन्ड लेके आना पड़ेगा लगता है. एनीवेज लेट्स सी मैप में. तो इसने बोला है कि मैंने मार्क कर दिया है. कहाँ मार्क किया है भाई? कहाँ मार्क किया है तूने? व्हाट? ओह ये है क्या? यही है क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं था. ओके एक यहाँ पर है. ऑलराइट एक यहाँ पर है. इस एरिया में होना चाहिए. हाँ एक यहाँ था. आइस रैंड शाइन. ओके नाम भी दिया हुआ यार मैंने देखा नहीं. ग्रास विदर. ओके ग्रास टाइप है ये. ठीक है. फायर कोर्ज करेज ये जो भी है. ये वाला कौन सा था? ग्राउंड ब्लाई. ओ भाई तो अलग अलग टाइप के जो श्राइन्स है वो हमें दिए हुए हैं. एनीवेज तो यहाँ पर हमें श्राइन्स का लोकेशन जो है वो मिल गया है. अब हम जो है मेरे ख्याल से यार ख़त्म करना चाहिए. बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है. काफ़ी सारी चीज़ें की हम लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है. और स्पेशली मुझे नहीं पता कि मैं कितना काटूँगा कितना रखूँगा. बट मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ो यार ज़्यादा सोचने का नहीं. एज इट इज़ मैं रख दूँगा. आप लोगों को देखना है तो आप देखो. नहीं देखना है तो स्किप कर सकते हो क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है वो हंट करने जाऊंगा इस श्राइन्स को मतलब कि लेजेंडरीज को. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में. बहुत बहुत धन्यवाद.